हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अभी तक जो हमने सीखा जेंगो में कि जेंगो में हाउ टू इंसर्ट डेटा, हाउ टू अपडेट डेटा, हाउ टू डिलीट डेटा एंड हाउ टू अपडेट जेंगो मॉडल। सो अभी जो हमारा टॉपिक है आज का वो है डिस्प्ले डेटा। कि हमने तो जेंगो मॉडल क्रिएट कर लिया है। Till now we create Django model with feeds and data we want it them. Now it is time to display the data in a web page. अभी तक तो हमने Django मॉडल बनाया, ठीक है। मैं आपको अगर दिखा सकूं, ये हमारा DB। अभी तक तो हमने Django मॉडल बनाया, हमने सीखा कि किस तरह Django मॉडल क्रिएट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद विद द फील्ड्स एंड डेटा जो हमें फील्ड्स चाहिए थी मॉडल्स के अंदर वो हमने बनाई जो हम चाहते थे। उसके बाद अभी टाइम है कि ये जो डेटा मॉडल हमने जो क्रिएट किया है उसको डिस्प्ले कर सके इन ए वेब पेज। ये जो डेटा इनका इस मॉडल का जो डेटा होगा उसको हम वेब पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू open my app. The app name is members, and creating an HTML file. I am going to create HTML file in the templates folder. The templates folder, in this file the name is all members.html. I am going to create an HTML file with name all_members.html and place it in the templates folder of the app. The app name is member. I hope this will make sense. मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर HTML कोड लिखना है और यहाँ पर मैं इसका टाइटल रख रहा हूँ members, or inside body I am going to create, I am using h1 tag here. The heading will be members, and after that I am going to use the another list, and inside this I am going to use the for loop for I in my members, and after that I am going to use the li list, and inside this I dot first name and close I dot last name and close this. And after that I am going to close my for loop and for. This will be and for. Do you see in this code? In this code, you will see I am using the person sign inside the brackets and also inside the HTML document. You are seeing this. They are Django tags. These are Django tags telling Django to perform some programming logic inside these brackets. Let me explain this for you. जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये जो परसेंट साइन इन ब्रैकेट्स के अंदर और HTML कोड के अंदर यूज़ किया है,
इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो मैंने यूज़ किया है ब्रेसेस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर, ये जो मैंने परसेंट साइन यूज़ किया हुआ है स्टार्ट और एंड में, ये बेसिकली इनको कहा जाता है जेंगो टैग्स। क्या कहा जाता है? जेंगो टैग्स। एंड ये जेंगो को बताते हैं परफॉर्म सम प्रोग्रामिंग लॉजिक बेस इनसाइड दिस ब्रैकेट। इनके अंदर प्रोग्रामिंग लॉजिक परफॉर्म करो। एंड आफ्टर क्रिएटिंग all underscore members.html file, now it's time to modify view, and the views of our app views.py. This is our views.py file of our app. The app name is members. So here I am going to update my members view function, and here my members and member dot objects dot all dot values, and I am importing this member from dot models import member, and after that template loader dot get template all underscore members dot html, and after that context I'm going to create a dictionary, and inside this my members and my members, I am passing the value my members. After that I want to return this view function something. Return http response inside http template dot render context and request. The member view, this members view does the following thing. Let me explain you. Create a my members object. This is a my members object with all the values of the member model. I am going to create a members object, and this member object have all the values of the member model, and then I am going to load the all members.html template. I am going to load template all underscore members.html template, and then I am going to create an object containing the my members object with name context, and then sends the object to the template and output the HTML that is rendered by the template. Let me एक बार मैं फिर आप लोगों के लिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैंने क्या किया इस व्यू फंक्शन के अंदर जिसका नाम मेंबर्स है। मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम मेंबर्स है, और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या दे रहा हूँ, जितने भी वैल्यूज़ हैं मेंबर मॉडल की वो मैं दे रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फाइल है all underscore members.html, मैं इस फाइल को लोड कर रहा हूँ, ठीक है। template loads the all underscore members.html template. I am going to load this to template, and then create an object with name context, and containing this context my members object. अपने my members object होंगे वो इस object context के अंदर है जो कि एक डिक्शनरी है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्पांस में सेंड कर रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को सेंड कर रहा हूँ, सेंड द ऑब्जेक्ट टू द टेम्पलेट। मैं टेम्पलेट के पास ये जो ऑब्जेक्ट है उसको
जिसका नाम कॉन्टेक्स्ट है उसको सेंड कर रहा हूँ एंड द आउटपुट HTML that is generated by the template। मैं आपको अगर दिखा सकूँ अगर आप भी मेरे साथ इन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, if you have followed all the steps on your computer, you can see the result in your own browser. Start the server. Let me start the server, close this, and here CLS Python manager py run server, and I just run my server and then navigate to the ब्राउज़र विंडो के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है 1278, इसके बाद मेंबर्स। जब मैं इसको इंटर करूंगा तो आप देखिए मेंबर्स। लेट मी सेव दिस एंड दिस as well, views, save this, and if I open, see guys, I am getting all the members with name Ahmad, Khan and Ahmed. All the members, 3 members, and I want to declare something, print my members, and if I refresh this you will see I am getting data in the terminal as well. The first name is Hafiz and then Anas, Khan, and all the data. And if you see here, I dot first name and I dot last name in members, and if I open this member dot objects dot all dot values, and I am passing this here. Refresh this. If you see here, I am getting just last names. Here all underscore members dot HTML, you see I dot first name. This is name, not aim, name. If I save this and save my views, if I refresh this you will see the first and last name, Hafiz Ahmad, Anas Khan, Anas Ahmad. Let me show you here in the terminal as well. The first name is Hafiz Ahmad and then Anas Khan and then Anas Ahmad. So I am getting the first name and the last name of all members inside the member model. So the next step in our web page will be to add a details page where we can list more details about a specific member. तो जो अभी नेक्स्ट टास्क है, हमने क्या करना है, ऐड लिंक टू डिटेल्स इन Django। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने एक और पेज क्रिएट करना है जिसका नाम details.html रखना है, और उसमें हमने एक स्पेसिफिक मेंबर की जो डेटा होगा ऑल डिटेल्स हमने शो करनी है स्पेसिफिक मेंबर का। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट one more HTML file here, details.html here। तो मैंने details.html फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ इसके अंदर मैं HTML का कोड कुछ लिखने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इस सारे कोड को भी सिर्फ यहाँ पर डिटेल्स लिख रहा हूँ। मेंबर डिटेल या डिटेल्स से लिख लूँ, टाइटल डिटेल्स हो जाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर आके मैंने h1 टैग यूज़ करना है, h1 टैग, और इसका क्लोजिंग h1 टैग, ठीक है। इनसाइड दिस मैंने Django माई मेंबर्स डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद माई मेंबर्स डॉट लास्ट नेम, ठीक है।
उसके बाद मैंने क्या करना है, पैराग्राफ टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ और इधर फॉर्म और फॉर्म के अंदर जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ माई मेंबर्स डॉट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मैं एक और पैराग्राफ टैग ले रहा हूँ, पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर मेंबर सिंस, जिसके पास मैं क्या दूंगा, माई ये डबल है, माई मेंबर्स डॉट जॉइन डेट, ये भी डबल में है, ठीक है। उसके बाद पी टैग एक और यूज़ कर रहा हूँ, जिसके पास मैंने बैक टू, इधर मैं एक एच रेफरेंस एंकर टैग यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैं जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मुझे कहाँ पे ले जाए, मेंबर्स जो पेज है उसके ऊपर ये मुझे ले जाए, मेंबर्स और मेंबर्स। लेट मी क्लोज दिस, ठीक है। तो अभी तक मैंने ये कोड HTML फाइल में लिख लिया। आफ्टर डूइंग these things in HTML details.html file, now I want to add link in all members template, and the list in all members.html should be clickable and take you to the details page with the ID of the member you clicked on. So for that, members, and then for I in my members, and on this line let me comment this, I want to change this list and I want to use the anchor tag, and here href details and close this, let me close with double quotes details, and after that and this will be, I am going to use the Django tags i.id, and after that I dot first name, and here I dot last name, and after that the for loop will be closed using the Django tags. So after changing all this, here this link should be clickable. As you see, I am using the anchor tag here, and this clickable link takes you to the details page with ID of the member. Then I am going to create a new view in the views.py file that will deal with incoming request to the details URL. So for that, let me comment this first, and create a new view with def members and request. After that, my members member dot objects dot all dot values, and template is loader dot get template all members dot html, and after this context
This will be dictionary, and my members and my members. I am passing the key here and return. I want to return HTTP response template dot render contexts and request. Then I need one new view function, details. This will be details request. If you ended out till now, please comment it. If you are new on this channel, don't forget to subscribe. I take a target to teach you Django in simplest and easy way. If you have any question till now, please comment it. Guys, अगर अभी तक यहाँ तक आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें. मैंने आपको समझाने के लिए अपना टारगेट रखा है कि आपको मैं आसानी से Django सिखा सकूं. तो उसके बाद माई मेंबर इसके बाद member dot objects dot r get id is equal to id, and here template loader dot get template details dot html, and after that context is equal to, this will be dictionary, and I am passing my member and the value is my member. This is my member, and after that I want to return something from this view function. Return HTTP response template dot render context request, and the detail view does the following. This detail view will do the following. On the first line, this will get the ID as an argument. Uses the ID to locate the correct record in the member table. By using this ID, this will locate the correct record in the member table, and this loader.getTemplate loads the details.html template, create an object to the template, creates an object containing the member, as you see, sends the object to the template, and you will see the output HTML that is rendered by the template. So now we need to make sure that the details URL points to the correct view with ID as a parameter. So for that I am going to open my app urls.py, and here needs some changes. I'm going to use path function, and inside this member details and int id, and after that from views.details, and the name is details. I hope this will make sense for you. Details views details. I'm getting some errors. Views
dot details. What about details? Let me save this. Now the problem solved. First save the views.py and then you will change here. This will give us no errors. And I hope if you follow all the steps on your own end, you can see the result in your own browser. If you refresh the browser, if I refresh this, as you see, I am getting 3. If your server is down, you have to start it again with run server command. And if I open this, you will see I am getting some errors. Details 1. Details got unexpected keyword argument ID. Let me solve this. If you see the details got unexpected keyword argument ID, and if you see the views function with name details, here gets the ID as an argument in the details view function. We have to get the ID as an argument, then use the ID to locate. Use this ID to locate the correct record in the member table. I hope this will solve this error for us. Save this and this as well. Let me refresh this. As you see, I am getting phone member since back to members, no member since no date, back to members. If I show you the SQLite database and here members.member, you will see I have only one record have giant date and phone, and if you see I am not getting this. Let me show you why. If I open views.py and details.py, here my members dot giant date and my members dot phone. If you see, I am not getting phone and member since. Why I am getting not this? Let me solve this for you. If you open us.py, all the things are okay. And if I open views.py, here we have my member, and in the members we have my members. And if I open details.py and details.html, I have my members. This will be my member. This will also my member, my member.phone and my member.giant. To show the details of a member, let me save my viewers.py, and if I want to refresh this, you see I am getting the name, full name, first name and last name. And if I go to members and if I click this, you see the phone number and since member and the first name and the last name. I hope this will make sense for you. In this tutorial we till now cover link to details. We create our details, our member details, our underscore members.html file, and then render all members detail to the web page, and then we create a page with name details.html, and then we show each member our details in the next page with ID. As you see, members details, the ID is 1 and all the data. If I go back, click this, details 3, ID is 3, phone none and member since no. मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी. The next topic is add master template. So for that, next one is add master template in Django.
the extends tag. In the previous pages, we created two templates, one for listing all members and one for details about a member. प्रीवियस पेज जो हमने बनाई है details.html और all_members.html फाइल जो हमने दो पेज क्रिएट किए थे, उसके अंदर हमने क्या किया, पहले में लिस्ट के आज जितने भी मेंबर्स हैं डेटाबेस से वो शो किए, और जो दूसरा पेज था वहाँ पे हमने क्या किया, डिटेल ऑफ ए मेंबर. So the templates have a set of HTML code that are the same for both templates. Django provides a way of making a parent template that you can include in all pages to do the stuff that is the same in all pages. So Django हमें क्या provide करता है, parent template. Django हमें एक parent template provide करता है जो कि हमारी मदद करेगा अगर हमारे जो पेजेस हैं उसका जो स्टफ है वो अगर सेम है आर पेजेस में, तो हमें सिर्फ पेरेंट टेम्पलेट को यूज़ करने पड़ेगा, जिसकी मदद से हमारा जो जितना भी सेम स्टफ होगा और पेजेस में वो सारा हमें मिल जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. सो फॉर दैट स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ टेम्पलेट कॉल्ड master.html in templates with inside the members. So I am going to create a file. This will be master.html, and here I am going to use all necessary HTML elements. So here I want to add title. So for title I am going to use Django tags. Django tags the person my and block title, and this is the block title, and this will be and block title and block. After that, inside body I am going to include more HTML Django tags. This will be block content and this will also end block and block. So I create Django tags with, and for the title block title and end block, and for body block content and end block. We see Django block tag inside title element and the body element. They are placeholders telling Django to replace this book block with content from other sources. So I remind you, do you see here the title and body element? I am using the Django block tag inside the title element and the body element. So basically these are the placeholders telling Django to replace this block with content from other sources. So I hope this will make sense. तो अब टाइम है टेम्पलेट्स को मॉडिफाई करने का. नाउ इट्स टाइम टू मॉडिफाई टेम्पलेट्स. As you know, we have two templates, all_members.html and details.html. We are going to use the master.html template for this, and this is done by including the master template with the extend tag and inserting a title block and a content block. Let me understand you this. I'm going to open all_members.html, and here on the top I am going to include Django extends, and this will extend from master.html, and in the block title here I am going to use
block Django tags here, and this will be block title, and the content of title is my tennis club list of all members, and after that I have to close this, the block title. So for this, Django here and block, this will end the block for title. I am going to end the block title, and after that if I open master.html side by side to show you, for body we have block content, and inside this all underscore members.html I am going to use block content here. यहाँ पर भी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है मास्टर के अंदर भी हमारे पास है, और यहाँ पर मैं Django टैग्स को क्लोज करने जा रहा हूँ। एंड ब्लॉक, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों ने भी अपना कोड अपडेट कर लिया होगा। मैंने क्या किया, पहले एक्सटेंड्स किया master.html को, उसके बाद ब्लॉक टाइटल और एंड ब्लॉक, उसके बाद फिर ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक। जिस तरह हमने ऑल अंडरस्कोर members.html में फिर जो चेंजेस किए हैं, same like we have to change in the details. So I am going to copy this extends master.html here to here, and here no need of this all. Let me erase this and this as well. After that, what we use here, as you see, we have to erase this, no need of here using, we are going the master.html and we are extending all this HTML code from our master.html, and that's why I am going to erase all this. So I hope this will make sense for you. Let me do all this, and for details as well, for body we need Django tags, and here for body we have block content, and end block. This will be end block. This will be end block. This is our body content of details.html, and I am extending from this, and for title I am using my tennis details, and I am going to set this code, and if I show you after all changes here,
And if you follow all the steps till now, according to my updation in the codes in master.html, in all underscore members.html and details.html, अगर आपने यहाँ तक कोड अपडेट कर दिया है तो अब इफ़ द सर्वर इज़ डाउन, अगर आपका सर्वर डाउन नहीं है तो आप चेक करेंगे रन सर्वर, जो लेट मी शो यू सर्वर इज़ रनिंग और नॉट. लेट मी क्लोज server and run this again. Let me run the server again. If your server is running already, no need to run again and again. So after this, and if I refresh this, guys, this video is going long. We will cover these things in our next video. I not want to take your more time, so I hope this will make sense for you. Keep in touch. Learning Django in simplest easy way. Keep in touch with our channel. Thanks for watching.